Assalamualaikum, dear student. Welcome to your new session of class 5. Today we will starting our chapter 1, which is characteristic and evaluation of computer. कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक और उसकी इवेल्युएशन मीन्स उसकी जो इन्वेंशंस हैं और कैसे हुई. So firstly we will start our lesson, which is on page number 1. So take out your page number 1. Here we have a chapter characteristic and evaluation of computer. You have learned in the previous classes that a computer accepts, store, process data according to a given set of instruction to produce the output. On our previous classes हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं तो उस इनपुट का प्रोसेस होता है डाटा विद द हेल्प ऑफ CPU and then we get a result on a display screen as a output. But do you know how computer was developed? मगर आप जानते हैं कि ये कंप्यूटर कैसे डेवलप्ड हुआ? The computer we use today are very different from early devices. जो कंप्यूटर आज के दौर में हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है अर्ली डिवाइसेस से, पहले की डिवाइसेस से that were invented for doing calculation, जो कि कैलकुलेशन के लिए इन्वेंट की गई थी. Let us learn some of the early calculating device. Some of the early calculating device are as follow. Number 1 is abacus. The abacus was probably the first calculating device. जो abacus है वो first calculating device है. It had a wooden frame with lead sliding on its wire. As you can see on the picture of page number 2, here we have a abacus device. You can see on that picture the frame of that device made up of wooden frame with bed lid sliding on wire. It was used to perform simple calculation like addition, subtraction, multiplication and division. ये जो डिवाइस है वो इन तमाम कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी. इट स्टिल इन यूज़ इन मैनी कंट्रीज. आज भी ये बहुत से कंट्रीज में यूज़ की जा रही होती है, स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. द abacus इज यूज टू टीच स्कूल चिल्ड्रन अबाउट प्लेस वैल्यू इन द अर्थ नंबरिंग सिस्टम. As you can see, our primary student also use this kind of device for placing the value of numbering system and also for teaching arithmetic operation to blind student. Blind student को arithmetic operation teach करने के लिए भी ये device use की जा रही होती है. Napier's bones. In 1616, Sir John Napier made the calculating device named Napier bone. Napier ने एक कैलकुलेशन डिवाइस बनाई और उस डिवाइस का नाम रखा गया Napier bones. The device called Napier bones and it had number carved on bones or on a strip of wood. It was used for addition, multiplication, division and to find the square root of a number. It has also the same function like abacus, like addition, subtraction, multiplication, division, but it can also use to find out the square root of a number, and you know very well what is the square roots. Pascaline. In 1641, Pascal invented the Pascaline for first mechanical calculator. First mechanical calculator invented by Pascaline. It consists of a rectangular box with movable wheels. As you can see on this picture, this is a rectangular box which have some movable wheels. It was used for adding, subtracting, multiplying and dividing the number up to 100 and 1000. Means 100 और 1000 से के नंबर भी वो इजीली कैलकुलेट कर लेता था. डिफरेंस इंजन. In the 19th century में चार्ल्स बेबेज invented a machine called the difference engine. चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट की एक ऐसी मशीन
जो कहलाती थी डिफरेंट इंजन के नाम से, टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल. Now move on page number 3. Here we have a analytical engine. Charles Babbage also invented the first general purpose computer known as analytical engine. Analytical engine invented by Charles Babbage, which is the first general purpose computer which had the same basic element as a modern computer have. इस कंप्यूटर के भी वही फंक्शन है जो कि हमारे आज के मॉडर्न कंप्यूटर के हैं. क्या? इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइस. On our modern computer, the same function we perform: input, output and processing unit. Due to his path-breaking contribution to computing, इसकी चार्ल्स बेबेज की ये कंट्रीब्यूशन जो है वो इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है. We will continue this chapter on our next class, inshallah.